idea about income under various heads. There are 5 heads which you have to study. What are those 5 heads? First 5 head, income from 5 heads are as follows. Number 1 is income from salary, which we had discussed in huge detail in the classes. Some of the students were present, some of them were not. So second is income from house property. This is the second head of income. Third head is income from profit or gain from business or profession. Fourth is income from capital gains. And fifth is income from other sources or miscellaneous sources. So one by one, we are taking up brief. So first of all, what is the complete process of computation of taxable income and tax? An individual or a single person can have income from all the sources. He can have income from, say, salary. He can have income from house property also. The same person can have maybe having some part-time business or some profession. He can have from this also. He can have from capital gain also. So we will see that how to fill up the final form. Number 1, what is the process? Number 1, you have to determine the residential status of the SSC. So this is also in your course, whether a person is a resident of India or whether he's a non-resident of India. If he is a resident of India, then you have to find out whether he's resident and ordinarily resident of India, or he or she may be resident but not ordinarily resident of India. So therefore, based on the residential status, you will determine the rate of tax, or you will determine whether a particular income will be taxable or not taxable. So residential status is the first step in the process of computation of taxable income. Secondly, the second stage is you have to determine the incidence of tax. Incidence means this incident does not mean ghatna. This means incidence means determine the value of tax, or determine the valuation of tax, or calculate the tax simply. Third stage is classify income after considering specific exemption into respective head. So sometimes, like in salaries, certain allowances are exempted, certain allowances are not exempted, certain perquisites are exempted, certain perquisites are not exempted, certain capital gains, for example, certain capital gains, long-term capital gains from shares are exempted up to 1 lakh rupees. Dividends are exempted up to 10 lakh rupees. So you have to see which income is exempted. Agricultural income, for example, is again exempted. So then you have to classify income with respect to agricultural income, dividend income, tax exempted allowances, or partially exempted allowances, or fully exempted allowances. Okay. Then you have to, fourth point is aggregate the income. Aggregate the income from the 5 heads which we had studied, which we have just seen. Apply clubbing provision. Day before yesterday, we were talking about clubbing provision. So double B will come over here. So clubbing means if a person has given some money to his wife, so that income will be considered to be of the husband, or the father has given some money to the minor children, then that also will be clubbed or aggregated in the income of the individual. So you will do that. Sixth step is set off or carry forward of losses. Again, we are going to study detail of this also if the time permits. Set off means adjustment of losses. For example, a person has got a business A and he has got another business B also. He is running 2 businesses. In one business, he makes a profit of, say, 7 lakh rupees. In business B, he makes a loss of 4 lakh rupees. So it's not that government will take tax from 7 lakh rupees and 4 lakh. What about 4 lakh, which he has incurred as a loss? So 7 lakh minus 4 lakh. His net income profit is 3 lakh. So income tax will be given on 3 lakh, not on 7 lakh. So that is called set off. Set off means adjustment with losses. Now, let me take another example. A person has got 2 businesses, business A and business B. Business A had profits of
7 lakhs. But business B has got loss of 15 lakh. So he has adjusted 7 lakh profit minus loss of 15 lakh. So this is equal to 8 lakhs of loss. So he could adjust only 7 lakh of loss. So 8 lakh of loss had to be carried forward to the next financial year. That is called carry forward. So in the next financial year, whenever he will have profit, now this will be adjusted with his loss. So if he has to set off and carry forward, then if any, he will adjust this. So the balance which comes in point number 7 will be his gross total income. Now, 8th point. Allow deduction under section 80C to 80U under chapter 6A. 80C, again, we have talked about it in the classes. 80C is the deductions under various investment option, let's say EPF contribution, employee provident fund contribution, public provident fund contribution, life insurance premiums, pension plans contributions, contribution to or investment in NSC, National Savings Certificate, investment in Sukanya Samriddhi scheme, investment in 5-year fixed deposit of a bank, principal repayment of a housing loan, educational expenses of up to 2 children. So like this, so he can, if he has invested any amount under section 80C, he can avail. Then there is section 80D, which is for medical insurance. If he has paid premium for medical insurance, he can get the deduction of that also. So similarly, there is section 80E, if it is for education loan, whatever education loan installment has been paid in terms of interest, that can also be deducted. So like that, there are so many deductions. So 9th point, balance will be his total income. So earlier was gross total income. When he has availed the deduction, will be his total income. 10th point, determine the tax now payable, applying the rates applicable. That is you will apply the slab rates, first 2.5 lakh, 0%, next 2.5 lakh, 5%, next 5 lakh, 20%, balance 30%, and then accordingly, surcharges, and finally surcharge you will add afterwards. So determine the tax payable, applying the rates applicable. 11th point is deduct rebate and relief of tax. Rebate, I have explained you earlier also. Rebate means if we talk about this current financial year, which is 1920, which is going to end now 5 days from now, today is 26th, 31st of March, this financial year 1920 will end. So in this financial year, government has given a rebate. What is the meaning of rebate? Rebate means? Sir, chhoot. Chhoot. Very good. Rebate means discount or chhoot. So what happens? People who are earning up to 5 lakh rupees. Let us say in this financial year, a person earns 5 lakh rupees. So you will calculate the tax. First 2.5 lakh, 0%. Next 2.5 lakh, 5%. So 2.5 lakh at the rate of 5% is equal to 12,500. So government has given a rebate of 12,500. So his tax will be calculated as 12,500. But then afterwards, a rebate will be given of 12,500. So his tax will become 0. So that is called rebate. But the moment he earns even 100 rupees extra than 5 lakh, he will not get this rebate. So this is a technicality. Similarly, there is another concept of relief of tax. Relief of tax is for surcharge. Actually, surcharge relief should have come afterwards. So anyway, in this slide it has come. So any relief, and there are certain sections in which certain reliefs are also there. So after that, you add at 4% cess, and if income is greater than 50 lakh, surcharge will be applicable.
right? If income is greater than 50 lakh and up to 1 crore, okay, surcharge at the rate of how much percent? 10% will be applicable. So, and if income is greater than 1 crore, 1 crore, surcharge 20%. at the rate of 15%. So 20 नहीं है? नहीं, 15% है. Okay, sir. So then balance tax is payable, is tax payable. So file return of income before the due date of filing. Usually what is the due date of filing in any financial year? जैसे अभी हम 31 मार्च को this financial year is going to close, तो इसका लास्ट डेट कब होगी फाइल करने की? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? 31 ऑफ जुलाई होती है. ठीक है, तो हो सकता है इस साल बढ़ा देगी गवर्नमेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. सर बढ़ा दिया. It has been extended. It has been extended. ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड. यस सर. Yes, sir. I think June तक है ना फ्रेंड्स? नहीं, वो कुछ June, और July. चीज है, वो दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज फॉर एडवांस टैक्स. अच्छा. No, sir, income tax returns. हाउ दैट इज फॉर एडवांस टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न. Okay. ओके, सर So- आपने क्या पूछा सर? मैंने पूछा था कि फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स व्हाट इज द लास्ट डेट? 31st March, sir. 31st March sorry, is the sorry, last date sorry, of the sorry. financial year. Financial year, sorry, date June में आती है सर. ये 31 जुलाई होती है यूजुअली. ठीक है सर. तो इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आते हैं? इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी पेंशन, इट कैन बी ग्रेचुटी, और इट कैन बी एनी फीस, कमीशन, परक्यूसिट, or profit in lieu of salary, or any advance salary, etc. So everything is included in income from salary. ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब कमीशंस वही हैं, कई बार इंसेंटिव मिलते हैं आपको इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये प्रोडक्शन के बेसिस पे. परक्यूसिट्स हमने एक क्लास में बहुत डिटेल में वी हैड एक्सप्लेन्ड इट. परक्यूसिट्स आर पर्क्स. फॉर एग्जांपल, द कंपनी इज गिविंग से फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री कार with fuel, driver, or educational allowance to the children of the employee. So they are called perquisites. So their valuation is also calculated and added in the salary of the individual. Right? So income from salary. List of allowances partially exempted from tax. So some of the allowances like conveyance allowance, earlier, now government has actually, we can call it partially allowance, because earlier conveyance allowance allow hota tha. 1920 में conveyance allowance की बजाय इन्होंने standard deduction दे रहे हैं. Children education allowance they give for tuition fees, they give 100 rupees per month. That is कितना हो गया? 1200 rupees per annum per child and up to 2 children. Similarly, hostel allowance अगर employer से मिल रहा है उसको, तो that is 300 rupees per month for hostel per child and up to 2 children. Similarly, any allowance granted to an employee to meet the hostel expenditure of his child, this is what I was saying, 300 rupees per month. Transport allowance, that is transport allowance. House rent allowance is also partially, there is a formula for that. Provident fund is fully exempt. So today the government, just now I was saying that just 15 minutes back, there was an announcement by the finance minister that for those organizations who Yes, sir. employ up Yes, to sir. 100 employees and where 70% of the employee draw salary less than 15,000 rupees per month. So for that organization, the government will contribute the 12% of EPF deducted from the basic salary of the employee in the provident fund. So instead of the employer, the government will deposit that amount from the salary of the employee. And not only that, the contribution of the employer, because the employer also has to contribute an equal amount, that contribution will also be provided by the government for the next 3 months, right? So gratuity is exempted up to 20 lakh for financial year 1920. Earlier year, if suppose the question comes for financial year 18-19, which most probably
MDU will ask. So then you will write 20 lakhs. So for 1920, क्या like सर एक बार सर प्लीज रिपीट सर MDU क्वेश्चन. if MDU asks you the questions relating to financial year 18-19 or 17-18, so till 18-19, gratuity was exempted only up to 10 lakh rupees. Remember that. Okay sir. Only in this current year, which is going to end on 31st of March, which is financial year 1920, it is 20 lakh. But prior to this, it was 10 lakh rupees. Just remember that. Okay, sir. And what I am saying is that MDU will most probably ask questions of 18-19 financial year only. Because they usually ask questions of 1 year prior to the examination. So, Okay, sir. so it was 20 lakh. It was, sorry, 10 lakh. So leave travel concession, many employers give LTC to the employers to travel for a holiday with their family. So up to certain limits, that is also partially exempted from tax. Similarly, compensation received at the time of voluntary retirement. If some employee has taken voluntary retirement, for example, nowadays BSNL and MTNL has offered their employees, because they are running in huge losses. Even Air India is running in huge losses. So they have told to their employees that you can take VRS, voluntary retirement. So we will give you some extra compensation. So extra compensation received up to 5 lakh rupees is exempted from tax. It is non-taxable. Right? So 10th point says encashment of earned leave at the time of retirement. So earned leave encashment is, for example, a person has not taken his leave, for which he was eligible. So at the time of retirement, the company gives him the salary for the leave which he has not availed. So that salary which he gets, it's called earned leave. So it is always exempted from tax. Similarly, computation of pension, some part of the pension, if he draws some part of the pension fund, computation of, I will make it pension fund. I'll make it pension fund. Right. So similarly, entertainment allowance. So you have to also see which are the allowances which are exempted from tax, fully exempt or partially exempt. So this is how the statement of total income from salary looks like. Particular basic salary, whatever salary is there. And then dearness allowance, DA, is because of the inflation linked allowance. Recently, the government increased DA for some of the employees. For government employees, the government has increased very recently. House rent allowance, then any exemption, for example, education allowance, whatever the exemptions are there. Then conveyance allowance, whatever exemptions are there. So accordingly, you will deduct them into this. Any exemption for bonus or gratuity, exemption of any perquisites. Some perquisites may be taxable, some perquisites may not be taxable. Any entertainment allowance. So you will come out to gross salary. So some these items will be added. These items over here will be deducted, like you make the accounts. So then other deductions under section 16 is a standard deduction, which is for financial year 1920, which is currently going on. The standard deduction for a salaried employee is 50,000. That is straight away 50,000 are deducted from the overall this gross salary from the employee, because government feels that the employee also will be spending some amount on conveyance, some amount on his dresses, etc. So he must be given some deduction. So for financial year 1920, the standard deduction under section 16 is 50,000. Just remember, for 1890 it was 40,000. So in your examination, if the question comes of 1819, you will say standard deduction is 40,000. So finally, you will calculate the taxable income from salary. Now next head is, first head was income from salary. Next head is income from house property. So it can be from houses, from bungalows, from buildings. So this is based on annual value of the property. Now here SSC should be the owner of the property, and he should have given it on let out actually. So let us understand the formula for this. Just 1 minute. Expected rent. Okay.
or I will just 1 minute. Actually, I was preparing this slide just before the lecture. So we will say annual value of the property. Okay, yeah, expected rent, it was right. Okay, let us see what happens. First of all, you have to compare municipal rent value with the fair rental value. Now this is income from house property. Yes, yes. Income from salary is done now. Yes, yes. Okay. Now, what is the municipal value of the property? Municipal value of the property is the annual rateable value of the property fixed by municipal authorities for levying municipal taxes on house property. देखिए हर प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव में देयर इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, सिमिलरली देयर इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और जहां जहां wherever you people are living, so there is a municipality over there. So based on the different areas of that town or of that city, they know what is the municipal value of that property. So based on that property rental value, they impose the municipal taxes. सरकारी वैल्यू सर. सरकारी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में चांदनी चौक में रहते हैं तो वहां की वैल्यू अलग होगी, वहां पे घर है आपका, या सदर बाजार में रहते हैं, पुरानी दिल्ली में रहते हैं, वहां अलग वैल्यू होगी. अगर आप ग्रेटर कैलाश में रहते हैं तो वहां की वैल्यू ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, रेंटल वैल्यू भी ज्यादा होगी. मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? तो यस सर. तो उसी हिसाब से वो टैक्स लगाते हैं, अपने म्युनिसिपल टैक्स लगाते हैं. चांदनी चौक में भी ज्यादा होगी सर वहां पे. हाँ, चांदनी चौक क्योंकि कमर्शियल एरिया हो गया, आप मतलब ट्रांस यमुना के एरिया में चले जाओ तो वहां थोड़ी यस. कम होगी, या जाफराबाद चले जाओ जहां पर अभी झगड़े हुए थे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में. यस सर. Yes, यस. तो हर एरियाज की जो है वैल्यूज जो हैं वो प्रॉपर्टी की सेलिंग वैल्यू भी कम ज्यादा होगी, और उसी तरह से रेंटल वैल्यू भी कम ज्यादा होगी. तो उसकी जो रेंटल वैल्यू है, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू उन्होंने एक बना रखी. यस सर. पहले वो आप देखिए, उसके बाद है तो वो हो गई म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, ठीक है, एमआरपी. Yes, sir. उसको आप कंपेयर करिए फेयर रेंटल वैल्यू. व्हाट इज फेयर रेंटल वैल्यू? Fair rental value means rents of similar properties in same or similar locality or in neighborhood. यस सर. म्युनिसिपैलिटी ने तो कुछ रेट अपने यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन उस टाइम क्या है कि उसकी फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, मतलब उस समय मार्केट वैल्यू आप समझ सकते हैं फेयर वैल्यू को, कि इस तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज की रेंटल वैल्यू क्या चल रही है, उन दोनों में से कंपेयर करिए. तो दोनों में से विचएवर इज हायर वो आप वैल्यू ले लीजिए. दैट वैल्यू, इस वैल्यू को लिखिए, इस वैल्यू को लिखिए, और विचएवर इज हायर यहां वो वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी. इसको ये मैं निकाल लेता हूं, ये इफ नो एक्सआर इसकी जरूरत नहीं है. राइट. सर हाँ, यस. इस बार मतलब हमारा अभी कॉलेज जैसे अप्रैल के बाद लगेंगे या फिर सीधा एग्जाम्स वगैरह होंगे? देखो, एज we will talk about it later, but as of now it is total lockout till 14th of April. After that also Yes, it might be extended. See, we don't know, because the government will take a call up. Yes, sir. So even if the college, there may be physical presence, but I think that online lectures, you are taking more interest in online lectures, and I am Yes, also sir. enjoying delivering lectures in online. So it is one and the same thing, right? Yes. So जो इन ऑनलाइन दोनों ज्यादा में से, बढ़िया है सर. हाँ हाँ, इसमें क्या है, आपके सामने देखिए प्रेजेंटेशन भी आ रही है और हर चीज आपके सामने, आप बिल्कुल पास यस से सर. देख. यस सर. यस सर. स्क्रीनशॉट ले Yes, सकते sir. हैं सर लिखने की जगह. हाँ हाँ, नहीं सही ये तो मैं बात आपको है. भेज भी रहा हूँ ना, मैं आपको भेज दूंगा ये. यस सर. यस सर. यस सर. तो आप क्या करिए, कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट वैल्यू और रेंटल वैल्यू में, दोनों में से जो हायर होगी वो वैल्यू आपने यहाँ लिख दी. अब सेकंड पॉइंट पे क्या करेंगे, कंपेयर वैल्यू ऑफ वन पे ये जो वैल्यू आई है, दोनों में से ये हायर होगी तो ये आ जाएगी, ये फेयर वैल्यू की वैल्यू हायर होगी तो ये आ जाएगी. इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट से. अब स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट भी कुछ गवर्नमेंट ने बना रखे होते हैं.
एक तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने अपने म्युनिसिपल रेंट वैल्यू बनाई हुई है, कुछ गवर्नमेंट ने भी स्टैंडर्ड रेंट लिखे हुए हैं कि भाई स्टैंडर्ड रेंट इज मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। एक साथ में गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट भी बनाया हुआ है कि भाई ऐसा नहीं है कुछ भी अनाप शनाप आपने रेंट ले लिया, तो एक स्टैंडर्ड रेंट बनाया हुआ है, कुछ एरियाज के लिए बनाया हुआ है, कुछ एरियाज के लिए नहीं बनाया हुआ। अभी जो नई कॉलोनीज बनी है उनके लिए स्टैंडर्ड रेंट्स नहीं है, जो पुराने शहर हैं या पुरानी कॉलोनीज हैं वहां पर स्टैंडर्ड रेंट बने हुए हैं। पहले टाइम में गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रेंट बनाए हुए थे। रेंट कंट्रोल एक्ट एक हमारे कंट्री में लागू होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट में यस सर टेनेंट की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक रेंट की लिमिट लगाई हुई है कि भाई इससे ऊपर जो है ना रेंट कोई चार्ज नहीं कर सकता। सर तो एरिया के हिसाब से होता है हर जगह ही। हाँ जी, वो भी एरिया के हिसाब से होता है। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट विद स्टैंडर्ड रेंट इफ एनी, इसमें यहां लिख देता हूं, वो वहां इफ एनी वहां आया हुआ था, यहां आना चाहिए अगर बना हुआ है तो उस एरिया का इफ एनी। तो इसको अगर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए, अगर स्टैंडर्ड रेंट कम हुआ तो फिर विचएवर इज लेस, इन दोनों में से लेस ले लेंगे। अगर ये लेस हुआ तो ये ले लेंगे, ये लेस हुआ तो ये ले लेंगे। ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है जी, ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहले आपको इसे याद करना पड़ेगा, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना। पहले म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू। म्युनिसिपल रेंट वैल्यू जो कि म्युनिसिपैलिटी ने वहां की निर्धारित की हुई है। रेंट, फेयर रेंटल वैल्यू जो कि आसपास की प्रॉपर्टीज की रहती है, उस तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज की। क्या पूछते हैं ना भाई आसपास के मकानों का क्या किराया चल रहा है आजकल, तो दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू। दोनों में से जो भी हायर है वो ले लोगे आप। फिर उसको कंपेयर करोगे, अगर उस एरिया को स्टैंडर्ड रेंट बना हुआ है तो उनमें से आप लोअर ऑफ द टू लोगे। वो जो वैल्यू आई है दैट इज द एक्सपेक्टेड रेंट, ER। नेक्स्ट, नाउ कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू ER विद एक्चुअल रेंट जो आप ले रहे हो, जो इनकम टैक्स का जो एसएससी है वो ले रहा है। ये हो गई ER, ये हो गई एक्चुअल रेंट। अब इसमें से दोनों में से हायर है, विच एवर इज हायर। सर पीपीटी शो नहीं हो रही। पीपीटी शो नहीं हो रही है? नो सर। अच्छा, हो रही है सर। मुझे सर नहीं हो रही है। सर की डीपी आ रही है मेरे इसमें। कंट्रोल जो बी भाई मेरा नेट स्लो है अनिकेत। दूसरे वाले में देख, दूसरे वाले में। नहीं और अभी आ रही थी पहले, उसके बाद अब अचानक से चली गई। अरे एक बार एग्जिट करके वापस आ जाना। अच्छा हाँ, ये कर सकता हूँ। तो अब दोनों में से, अब जो पीछे से जो वॉट एवर एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू यू हैव टेकन एंड वॉट एवर एक्चुअल रेंट दिस पर्सन is being taking from his tenant, now the higher value, whichever is higher of these two value, will be the gross. Here also I am removing this. So whichever is higher is called gross annual value of the property. ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस। नाउ दिस वुड बी द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल टैक्सेस, whosoever is the landlord of the property, whosoever is the owner of the property, he has to pay the water tax, municipal tax, house rent, house tax, etc. वही तो देगा ना, किराएदार नहीं देता है। यस सर, वही मालिक देता है सर। वो मालिक देता है, ओनर देता है। तो ओनर ने ये निकाल लिया आपने उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम टैक्स। लेकिन सर ओनर उससे जो रेंट रहता है, रेंट पे उससे ले भी लेता है ना कैश। वो बात क्या थी? नहीं, वो तो रेंट में शामिल कर लेता है, जो भी है वो रेंट ले रहा है। वो रेंट का जो रेट है, जिम्मेदारी ये उसकी होती है, जो भी उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो होते हैं ना, यस, वो लेस करने के बाद इसमें से ये जो अब वैल्यू निकलेगी ये कहलाएगी एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके सर, ठीक है जी, ये हो गई एनुअल वैल्यू। तो स्टेप्स याद कर लीजिए। पहले कंपेयर करिए म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, दोनों में से हायर फिगर को ले लीजिए। फिर उसको कंपेयर करिए, कोई स्टैंडर्ड रेंट उस एरिया का बना हुआ है उससे कंपेयर करिए, उन दोनों में से अब लोअर लीजिए। फिर जो ये कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को जो एक्चुअल रेंट ले रहा है उससे कंपेयर कीजिए। इन दोनों में से जो हायर है वो लेंगे। अब ये देखिए, गवर्नमेंट ने पता है कि ये रूल कैसे बना। सर प्लीज सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। पीछे गए हम, उस एरिया की म्युनिसिपल रेंट वैल्यू देख लो और फेयर रेंट वैल्यू देख लो कि मतलब जो उस एरिया का फेयर रेंट क्या चल रहा है, उन दोनों को कंपेयर करो। उसमें से जो हायर वैल्यू है वो ले लो आप।
ओके सर। इस हायर वैल्यू को अगर उस एरिया में कोई स्टैंडर्ड रेंट कानून लागू होता है तो उन दोनों में से कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये इन दोनों में से लोअर लोगे, पहले दो में से तो हायर ले ली, इन दोनों में से अच्छा लोअर सर। जो वैल्यू आ गई, ये कहलाएगी वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट। ओके सर। ये गवर्नमेंट ने अपनी फिगर्स बना ली, ये एक्सपेक्टेड रेंट है भाई उस एरिया का। ओके सर। समझो ये म्युनिसिपलिटी के तो रोज रोज चेंज नहीं होते ना, तो फेयर रेंटल वैल्यू यस से सर। कंपेयर कर लेते हैं वो, ओके सर। क्योंकि म्युनिसिपलिटी तो, क्योंकि मार्केट रेट तो चेंज होता रहता है ना यस सर, सही बात है समय सर। समय यस पर। म्युनिसिपल रेट वैल्यू इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, तो उन्होंने ऐसे रूल बना लिए इन दोनों में से जो फेयर रेंटल वैल्यू है कि भाई कितना रेंट चल रहा है उस एरिया का, फेयर रेंट क्या चल रहा है, उसमें से हायर वैल्यू ले दी, जिससे कि सर। ये पता है अगर ये नहीं करेगी गवर्नमेंट तो लोग तो बहुत कम किराया दिखाएंगे, और करते भी हैं लोग। किराया लेते हैं 25,000 रुपया महीना किसी फ्लैट का, और उसको रसीद देते हैं सिर्फ 10,000 रुपए महीने की। ओह, ये तो गलत है सर, ये तो। जिससे कि उनको टैक्स कम देना पड़े। यस सर। चीटिंग है यस सर। सर। इनकम कम करने के लिए उसको रसीद कम की देते हैं। यस सर। तो उस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जितना रेंट चल रहा है हम उसके हिसाब से, अगर हमें पता चल जाएगा ना कि तूने रेंट कम लिया है, तू बोलता रहे तूने रेंट कम लिया है, लेकिन हम तो इस फॉर्मूले से लेंगे, तो तेरी वो मान लेंगे इनकम। तो इनमें से दोनों में से हायर ले ली, Yes, sir. स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर ले लिया, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ये एक्सपेक्टेड रेंट को अब एक्चुअल रेंट वो जितना ले रहा है इन दोनों में से कंपेयर किया, इसमें से फिर ये हायर वैल्यू ले ली। ये हायर वैल्यू उन्होंने मान ली है। मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है, मैंने उसको दे दिया कि मेरा कोई घर खाली पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार जो देना हो दे देना। उसने मेरे को एक नॉमिनल, सपोज उसका किराया चल रहा था 25,000 रुपया महीना, उसने मेरे को नॉमिनल 10,000 रुपया महीना दे दिया, और एक्चुअल लिया है मैंने उससे 10,000 रुपया महीना, मगर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा हायर निकाल देंगे, वो तो ये वाली वैल्यू लेंगे मेरी, हायर ऑफ द टू। तो वो इस वैल्यू को मेरी रेंटल वैल्यू मान लेंगे, एनुअल वैल्यू। तो ये हो गई मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ गए अब आप? यस सर। तो आप अगर चाह करके भी किसी को कम रेंट पे दे नहीं सकते, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार को या अपने घर वाले को। गवर्नमेंट तो आपसे जो उसकी एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपकी इनकम मान लेगी इसको, ये जो इनकम है हायर ऑफ द टू, दैट इज द पॉइंट। सो फ्रॉम दिस, ये तो आपने क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये हाँ एक बार बताया था क्लास में। ठीक है मैं एक बार सब पढ़ाया हुआ है सर, हाँ पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है सर। ये क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं फिर। अरे तो ये sir has taught income from salary. He's not taught house property. नहीं एक बार पढ़ाया था जब ये माधव था। भाई ये चील किसके घर के ऊपर उड़ रही है यार, अंदर चले जाओ, कार्ड चाहिए बेकाम काम। ठीक है, तो इसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्सेस, इफ यू हैव रिड्यूस्ड म्युनिसिपल टैक्सेस देन कम्स योर, दिस इज योर एनुअल वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल रेंटल वैल्यू और योर रेंटल इनकम। बट अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी इसके आगे भी है। ये तो हमने एक्सप्लेन किया व्हाट इज म्युनिसिपल रेंट, value fixed by the municipal or local authority, fair rent which a similar property will fetch at the same or nearby similar locality, standard rent fixed by the Rent Control Act, or maximum rent an owner can claim from his tenant as rent, actual rent for which the property has been let out. So this, ये हमने आपको शो भी किया है इसमें इलस्ट्रेशन से। हाँ, इसके अंदर एक और पॉइंट है, अभी मैंने बोल रहा था ना समथिंग, ये नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद, जैसे ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, इसमें से आपने लेस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, तो आ गई नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये क्या चीज है? एनीबडी कैन टेल मी ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। सर जो सरकार रिबेट दे रही है सर। हाँ रिबेट है, ये एक्चुअली का डिडक्शन है। थोड़ा सा और एलॉबरेट करिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये लोन वोन के ऊपर है, जो लोन वगैरह कोई इंसान लेता है तो उस पे ये डिडक्शन होता है। जैसे सर सरकार सबको थोड़े बहुत रिबेट देती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर जगह के लिए। ये नहीं, एक्चुअली रिबेट नहीं, डिडक्शन है। ये तो था म्युनिसिपल टैक्स, ये तो एक्चुअल उसने पे कर दिए सर। ये कुछ सेक्शन के अंडर कुछ अमाउंट, वो परसेंट होता है जो डिडक्शन मिलता है सबको, ये शायद वो होगा सर। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब हर एक के लिए है, ये जितना भी ये वैल्यू आया इसका 30% लेस करके ये जो वैल्यू आएगी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी।
और इंटरेस्ट जो आप बता रहे थे ना, इंटरेस्ट यहाँ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर उसने उस घर के लिए कोई लोन लिया हुआ था तो वो इंटरेस्ट भी लेस कर सकता है इसमें से। अब ये क्यों मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? जो मकान मालिक होता है उसको ही सारी रिपेयर करानी पड़ती है, व्हाइट वॉशिंग करानी पड़ती है प्रॉपर्टी की। यस सर। किराएदार से किराया ले रहे हो तो किराएदार थोड़ी कराएगा व्हाइट वॉशिंग, किराएदार थोड़ी उसका रिपेयर कराएगा। सो हु विल डू द रिपेयर? द हाउस ओनर। So owner has to spend money on the house also. So sometimes he may spend more, sometimes he may spend less. So doesn't matter, government ने उसको स्टैंडर्ड कर दिया। क्योंकि लोग कई बार क्या करते थे, पूरा पैसा दिखा देते, मैंने तो रिपेयर में लगा दिया, जीरो कर दी अपनी इनकम। तो वो सब खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा आपने कम किया ज्यादा किया, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया हर एक के लिए 30% जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है प्रॉपर्टी की, रेंटल वैल्यू की, उसका 30% आप डिडक्शन ले लो। लेट्स से साल में 20,000 रुपए का रेंट लिया आपने, तो एक साल का कितना हो गया? 12 to the 24, 2,40,000 रुपीज नेट। आपका सपोज कर लीजिए सब काट कूट के नेट एनुअल वैल्यू आई है, म्युनिसिपल टैक्सेस काट के 2,40,000। आपने 2,40,000 का 30% निकाल लीजिए आप, कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000 का 30%, 9,60,000 72,000 हो गया। 30% इज 72,000। तो 72,000 आप इसमें से लेस कर लोगे। 2,40,000 का 30% इज 72,000 यहाँ से 72,000। और जो उसने रेंट पे कर रहा है, वो सॉरी इंटरेस्ट पे कर रहा है फॉर हिज लोन, ये भी लेस कर लोगे इसमें से। तो ये जो रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो दिस इज हाउ यू कंप्यूट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। Yes, sir. Right. So what I am giving you today a comprehensive view of your subject. So now you have to do problems on them. So now I take the third head today, which is income from profit or gain from business or profession. So whether you have a business, whether a trading business or a manufacturing business, or whether you are a professional, you are doing your private practice as a lawyer, as a chartered accountant, as a doctor, as a consultant, as an agent. So you will show your income under this head, because it is not, you cannot call it salary, right? So it is profit or gain, profit from business or gain from profession. So it can be profit or gain from business profession, profit on sale of import entitlement license, or you have got any duty drawback, value of benefit arising from. These are some one and the same thing, trade and profession, or it may be speculative transaction, or income received under key man insurance policy, or any interest, salary, bonus, or commission or remuneration received by a partner of a firm. So we will talk about it later. I am not talking about the detail of how to calculate, because this we will do sometime later, or maybe in the class physically. So right now, another head. So we have talked about income from salary, income from house property, income from business. Now income from capital gain. What is capital gain? Capital gain liability arises when following conditions get satisfied. Number one, there should be a capital asset. सर अब आवाज में दिक्कत आ रही है सर। Okay, there should be a capital asset. Now is it better? Yes sir, yes sir. There should be a transfer of asset. Transfer should be in the previous year. Result of transfer should be profit or gain. Such profit or gain is not exempt. Okay, now let me explain you in some simple words. What is a capital gain? Suppose I have got a property. This property or a real estate asset may be residential property, it may be a commercial property like a land, it may be a shop, it may be a building. If I sell it and I make a profit out of it, that is, I sell it in a higher rate, so it will be known as capital gain, right? For example, I purchased a property 10 years back and I spent 10 lakh rupees. Now I have sold that property after 10 years in 21 lakhs.
So 21 lakh minus 10 lakh is how much? 11 lakh. So 11 lakh becomes my capital gain because my capital has been increased. Similarly, if I have got some jewelry or gold biscuits and I sell that jewelry at a higher rate, again, the profit which I make is known as capital gain. So capital gain is not part of business and profession, because in business, you are selling regular goods every day. But such kind of assets are not sold every day. They are sold once in a while, like jewelry, like real estate, Yes, like sir. shares. Even shares also come under capital gain. Capital. When Yes, you sir. sell your shares at a higher rate, it is a capital gain. When you sell it at a loss, it is known as capital loss. Similarly, mutual funds, units, when you sell it at a higher rate is again capital gain, or when you sell it at a lower rate, capital loss. Similarly, there are certain bonds and debentures. Also, when you sell it, it constitutes an asset. So that is why now there should be a capital asset. So assets means jewelry, real estate, shares, bond, debentures, etc. Or other commodities. It may be silver, it may be platinum. And there should be a transfer of assets. And transfer should have been in previous year. Previous year means for 1920 will, this financial year 1920 will become previous year for 2021. Similarly, for assessment year 1920, previous year is financial year 1890. तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी या कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है 1920 में, तो मैं उसका असेसमेंट कब होगा? 2021 में। 2021 में सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर शुड रिजल्ट इन प्रॉफिट या गेन। तो प्रॉफिट और गेन जो हुआ है वो कैपिटल गेन कहलाएगा, उसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। सो ऐसा प्रॉफिट एंड गेन इज नॉट एग्जाम्प्ट, मतलब कुछ हद तक एग्जाम्प्ट होते हैं कुछ, लेकिन बाकियों पे टैक्स देना पड़ता है, राइट? तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। यस सर। कैपिटल गेन में एक्सक्लूजन क्या होते हैं? एग्जेम्पशंस। एनी स्टॉक इन ट्रेड, जैसे मैं बता रहा था बिजनेस में आप सामान बेच रहे हो, आप टीवी बेच रहे हो, आपकी टीवी की दुकान है, आपकी फ्रिज की दुकान है, वो कैपिटल एसेट वो भी है, लेकिन वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो एक रेगुलर आइटम है जो बेचते हैं, तो उसको कैपिटल एसेट नहीं बोलते। मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होती है वो नहीं आती कैपिटल एसेट में, लेकिन इसमें ज्वेलरी, इट एक्सक्लूड्स ज्वेलरी। ज्वेलरी आती है, जैसे मैंने बताया आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, वो कैपिटल गेन में आते हैं। सर हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो। एग्रीकल्चरल रूरल लैंड को अलग रखा हुआ है कैपिटल गेन से, क्योंकि एग्रीकल्चरल रूरल लैंड क्योंकि फार्मर्स का होता है, तो उसको पर कैपिटल गेन से अलग रखा हुआ है उसको। सिमिलरली, हाँ जी, एक टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम, वो नहीं आएगा ना हमारा सिलेबस में? वो नहीं है ना? नहीं वो है सिलेबस में है सर, नहीं क्योंकि नहीं, वो अलग चैप्टर दिया है सर, और सिलेबस में एग्रीकल्चर इनकम का इतना कहीं भी डिटेल में नहीं नहीं पढ़ना, बस शॉर्ट में पढ़ना है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बस इतना पढ़ना है। अच्छा, बस इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है सर। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, उसको ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगाती है। स्पेशल बियरर बॉन्ड कोई गवर्नमेंट निकालती है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अभी गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, उनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं वो एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, ठीक है सर? बड़ा सन्नाटा सा है, क्या चक्कर है? अब देखिए टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स होते हैं, दो तरह के कैपिटल एसेट्स। कैसे भाई, कैसे सब यही है? सब यही शांत हो जाए यार, पढ़ने दे। पढ़ लीजिए, बाद में बात इसमें आपके क्वेश्चंस बीच में होंगे तो आप पूछिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, सॉरी ये गलत, इसमें एसेट नहीं आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और losses. Similarly, long-term capital gains or losses, right? Now,
यहाँ तो हमने अभी शॉर्ट में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा मैं आपको इसमें इलेबोरेट करना चाहूंगा इसको। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉसेज होते हैं, इनका अलग अलग रूल है। रियल एस्टेट के लिए अलग रूल है, शेयर्स के लिए अलग रूल है, म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग रूल है, बॉन्ड्स के लिए अलग रूल है, ज्वेलरी के लिए अलग रूल है। जो सबसे कॉमन है, जैसे प्रॉपर्टी, इफ यू हैव सोल्ड योर प्रॉपर्टी विद इन 2 years of its acquisition, property that is real estate, then it is a short term capital gain or loss. Whatever आपने गेन लिया है या लॉस लिया है, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा विद इन 2 years अगर आपने सेल किया है तो। पहले ये याद रखना, ये 17-18 तक 3 साल था, उसके बाद 18-19 से इसको इन्होंने 2 साल कर दिया। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनेशन में वो कौन से ईयर का पूछ रहा है। तो 18-19 के बाद से 2 years कर दिया शॉर्ट टर्म। उससे पहले 3 साल के अंदर अगर आप बेचते थे तो शॉर्ट टर्म कहलाता था। 3 साल के बाद आप बेचते हैं प्रॉपर्टी को, सॉरी अब क्या कर दिया है, 18-19 के बाद 2 साल के बाद आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म। तो दोनों के लिए अलग अलग रेट्स हैं टैक्सेस के। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, शेयर्स, विच इज अगेन a common thing. Shares. In case of shares, equity shares I am talking about, if you sell your shares within 1 year of their purchase, it is known as short term gain or loss. Within 1 year आपने उसी financial, and 1 year is calculated from the financial year 1st April to 31st March, तो वो आपका gain या loss होगा short term। 1 साल के बाद यानी 365 days, पूरा साल हो जाता है हम मानते हैं, 365th डे को बेचा या आपने उसके बाद कभी भी बेचा, 366th डे बेचा या 10 साल के बाद बेचा या 20 साल के बाद बेचा, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। ये आप याद रखिए। म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होते हैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में तो वही एक साल वाला है जो इक्विटी में है, 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, up 1 year and above is long term. But in debt-based mutual fund, debt-based, the mutual funds who have invested in bonds, debentures, for them 3 years, within 3 years, if you have sold your units, is short term. More than 3 years, if you have sold your debt-based mutual unit, is long term. For jewelry or gold jewelry, if you have sold your gold or your gold jewelry within 3 years, again short term. If you have sold after 3 years, it is long term. So you are seeing my cursor also, right? So these are some of the rules. So what are the rates, etc., that you will have to remember. So right now you must know what is short term capital gain, what is long term capital gain, and it is different for different commodities or different assets. Now we come to, so 4 heads, first 5 heads are there. First head is income from salary, second head is income from house property, third head is income from business or profession, fourth head was income from capital gain, and now the 5th head is income from other sources. Other sources means miscellaneous sources. What does it include? Dividends. If you invest in shares, if you invest in mutual funds, you get dividends. Dividends are nothing but share in the profits of the company or a part of the profits of the company. Or you have received a windfall from lotteries or crossword or gambling. Sir, return for taking risk. Reward for taking risk, sir. Whatever you may call it. Or income by way of interest on certain securities. Interest on, say, saving bank account, interest on fixed bank account, interest from bonds, debentures, all that will come under this. Or income from any royalty. For example, there is an author, he has written a book, so depending on the number of books sold, he gets a royalty. There are lyric writers or music directors who make songs, so depending on the popularity of the song, the number of CDs or DVDs sold,
they get a royalty. Directors of the movies, they also get a royalty. So all that will come under income from other sources. Director fees. Now there are board of directors. You have studied capital. You have studied company law. So in company law, you have studied, how companies operate, how there are board of directors. So directors get their fees, and sometimes there are certain independent directors, they get sitting fees to attend the meeting. So all that also is a income from other sources, or income from other investments. For example, shares, income from not shares तो capital gains में आ जाएंगे. Income कोई भी और लोग छोटे मोटे investment में डाल दिया पैसा, कहीं से आ गया पैसा. So all that will income from other sources. कहीं से आपको गिफ्ट मिला, हाँ गिफ्ट भी इसके अंदर हम डाल देते हैं, income from gift. Income from gifts, etc. So these are some miscellaneous sources, or you can say tuition, income from tuition, or exam invigilation, or from the teacher's point of view, अगर वो अलग से कोई ट्यूशन ले रहे हैं, एग्जाम का इन्विजिलेशन करते हैं तो उसकी अलग फीस मिलती है. जैसे कहीं बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के इन्विजिलेशन के अलग से पैसे मिलते हैं उनको. फिर कॉपी चेकिंग, हाँ नहीं मिलते, मतलब जहाँ अगर बोर्ड की कॉपी अगर चेकिंग करने के लिए आती है, यूनिवर्सिटी की अगर कॉपी चेकिंग होती है, तो उसके ये सब मिसलिनियस इनकम में आ जाते हैं, एक्सेट्रा. Right? So income from racehorse also comes in this head. That can also come. Racehorse. Yes. Lotteries, crossword, gambling, any quiz, games, horse racing, etc. Other than windfall, so just basically income from. Right. So basically you have to, these are the 5 heads. The whole course is based on these 5 heads. So you have to study further details of these 5 heads. Details, calculation, computation of tax of salary, similarly detailed computation from house property, similarly from business and profession, profits and losses, from capital gains, right? So sorry to interrupt, but so even income from other sources, is that a practical subject? I mean, practical chapter, or is it just theory? Little bit of practical is there. It's only from income from salary, house property, profits from business and gains, and capital tax. I mean, capital gain. These are the major, like, practical portions. Yes. Okay. Now 1 hour is over for this lecture, so another half an hour is left. So are you seeing another slide on my desk? काफी नहीं है सर इतना. Yes, sir. सर थोड़ा सा ये पढ़ना भी पड़ता है सर घर जाकर दोबारा से. कोई बात नहीं. देखिए अभी थोड़ा सा टाइम हम पूरा कर लेते हैं, फिर टाइम वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम आल्सो नो अर्लियर. ठीक है, तो अभी पढ़ लीजिए आप, कोई बात नहीं. ठीक है. अब मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, ये अब आपकी समझ में आएगा, इसलिए इट वाज नेसेसरी टू कवर दैट ऑल द 5 heads. So this is again a very interesting topic for you. Once I was in a class when Madhav was also there in that class, I had explained this also briefly. Set off and carry forward of losses under the income tax act. Yes sir, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है sir. You were there in that class, so that is why I am saying. So
again, as I explained you in my earlier slide also, set off means adjustment of loss. I explained you with an example. Suppose मेरा इतना लॉस, दो बिजनेस हैं या दो शेयर्स मैंने लिए हुए थे, एक शेयर्स में तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, दूसरे शेयर्स में लॉस हो गया, तो मैं एडजस्ट करूंगा ना प्रॉफिट को लॉस में. और अगर दूसरा लॉस इतना बड़ा है कि उस साल वो एडजस्ट नहीं हुआ, दैट इज इट वाज नॉट एबल टू सेट ऑफ, देन आई एम कैरिंग इट फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. Now, first of all, this is an income tax document only, income tax department, made by income tax department. So, and it's a latest thing. So, number one, their heading is, इसको थोड़ा बड़ा करूं और फिर इसको loss from exempted source of income cannot be, मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा हूं और उसको फिर समझाऊंगा आपको. Loss from exempted source of income cannot be adjusted against taxable income. For example, agricultural income is an exempted income in India. On agricultural income कोई टैक्स नहीं लगता. Yes sir. तो अब आप कहो बिजनेस इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स लगा है, उसको आप एडजस्ट कर रहे हो अपनी दूसरी इनकम से जो एग्जेम्प्टेड इनकम है. नहीं सॉरी, एग्जेम्प्टेड इनकम, सपोज एग्रीकल्चरल इनकम से आपको 5 लाख रुपए की साल की इनकम हुई है, ठीक है, और दूसरे एक और बिजनेस था आपका, कोई शॉप थी, उस शॉप में आपको लॉस हो गया 4 लाख का. तो आप बोल रहे हो कि भाई जो मेरे को प्रॉफिट हुआ एग्रीकल्चर से 5 लाख माइनस 4 लाख जो मेरी शॉप थी उससे, तो मेरा लॉस एडजस्ट हो गया, तो 1 लाख का मेरे को प्रॉफिट. या सपोज कर लीजिए 5 लाख की इनकम आपको एग्रीकल्चर से हुई है, 6 लाख का आपका लॉस हो गया दूसरे बिजनेस से, तो उससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते. मतलब वो अलग एक हेड है, एग्जेम्प्टेड सोर्स से आप एडजस्ट नहीं कर सकते जो टैक्सेबल इनकम है. टैक्सेबल इनकम को दूसरी टैक्सेबल इनकम के साथ ही एडजस्ट करना, पहली बात. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. इन्होंने लिखा भी एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम. देखिए, जस्ट सी माई कर्सर. एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हेंस इफ द टैक्स पेयर इनकर्स लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, हाँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, देन सच लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर टैक्सेबल इनकम. ठीक है. So basically, taxable income can be adjusted with another taxable income. Absolutely, in short, yeah. Second point is meaning of intra-head adjustment. Now, I will explain you it in a very simple language. You all of us use internet, isn't it? We are all using internet right now to study from this online class. There is something called intranet also. So, what is the difference between internet and intranet? So intranet is a domain on which is run through So offline. intranet is installed within a same building for communication, information sharing, whereas internet is a global connection of all systems. Yes sir. So internet is public, intranet private, in short. हमने Absolutely क्या right. बोला भाई? Absolutely. हमने क्या बोला? हमने क्या Very बोला? nice. Everybody, You're saying it's in a building. What if लड़ाई it's नहीं, in a लड़ाई house? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं. everybody is absolutely right. Okay, please put your mics off now. Everybody is absolutely right. Everybody is told in his own, paraphrasing language. So, like internet, you said, is a global, worldwide network. That is why it is World Wide Web, www. So anybody can access it. It is not bounded by the boundaries of a country, of a nation. But intranet is confined to an organization. Only organization, a particular organization, people, or maybe limited to one house, maybe one building, or maybe one organization. So only employees of those organization can access that site. So from that perspective, now you will not forget it. Meaning of intra-head adjustment within that head. Like intranet is within an organization, within a particular boundary. So intra-head means if it is a capital gain of shares, it has to be, capital gain of shares has to be adjusted with capital loss of another share.
If it is a house property loss, it can be adjusted with gain from another house property. Or if it is my business A, it has to be adjusted with another business B. Are you getting my point? So capital gain Yes, has sir. to be adjusted with capital loss. House property loss has to be adjusted with another house property gain. Business A with business B. Not that I am getting salary and I am adjusting my business loss with my salary. No, that will be intra head, because these are two different heads. So intra head is within the same heads, within salary to salary, or business to business, or capital gain to capital gain. All the 5 heads which you have studied. Okay. So that is called meaning of intra head. Now, what are the restrictions? So you have understood what is the meaning of intra head adjustment. Now, what are the restrictions? These are some of the points that you have to keep in mind while making intra head adjustment of loss. Now, number 1 point. Now see my cursor. Loss from speculative business cannot be set off against any income other than income from speculative business. However, non-speculative business loss can be set off against income from speculative business. Now, what are speculative business? What are non-speculative business? For example, business where you are selling grocery items is a non-speculative business, because whatever is the MRP you are selling on MRP, or you are whatever, there is a particular rate on which you are selling. The rates do not move up and down. That is called. Sir, please repeat, sir. एक बार repeat कर दो, sir. Speculative, non-speculative. Non-speculative business are those business which are normal businesses where you are selling normal products which are sold on their MRPs. For example, television, fridge, grocery items, flour, pulses, food items, namkeen, biscuits. These are all non-speculative businesses, because these goods are stored in your showroom, in your godowns. तो जो भी उनका रेट है उसके ऊपर आप बेचते हो, तो कोई स्पेकुलेशन का मतलब है उसके रेट्स आर, देयर इज नो स्पेकुलेशन इन देयर रेट. डिमांड सप्लाई का भी फर्क हो जाएगा सर, है ना? इनमें नहीं होता वो. नहीं, उनमें ऐसा नहीं होता है कि कुछ बिजनेसेस होते हैं वो दे आर हाईली स्पेकुलेटिव बिजनेस. फॉर एग्जांपल गोल्ड सर, gold, you can see gold business, depending on the gold rate prevailing as on today. So सर बहुत डाउन किया है सर गोल्ड का प्राइस अभी. तो वो हो गया स्पेकुलेटिव बिजनेस. सिमिलरली एक तो है आप पल्सेस को पैक पल्सेस में दे रहे हो, दैट बिकम्स अ ब्रांडेड आइटम, तो उसके ऊपर एमआरपी है, उसका रेट्स जो एमआरपी है आप उससे ज्यादा नहीं बेच सकते. लेकिन अगर आप खुले बाजार में, जो होलसेल की मंडी में, जब आप दाल के जो मंडी में भाव होते हैं, चने के, दाल के, वो डेली के डेली उनके प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं. तो जो लोग उसके होलसेल में डील करते हैं वो क्या करते हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं. वो लोग उसको स्टोर करते हैं गुड्स को. इट मे बी चना, इट मे बी ज्वार, इट मे बी बाजरा, इट मे बी कॉपर, इट कैन बी ब्रॉन्ज, इट कैन बी menthol oil. So these people are storing it in bulk, in quantity, so their rates are set by the international markets. So when they are selling them in bulk, it becomes a speculative business. So the rates is not on MRP basis, it's based on the international pricing. Similarly, in India also we have, if you know, beside equity stock exchanges like NSE, BSE, we have got commodity exchanges also in our country. Like the biggest exchange of commodity exchanges, MCX, Multi Commodity Exchange of India. तो यहाँ पर जितने भी ये कमोडिटीज होती हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त, जैसे शेयर्स में स्पेकुलेशन होते हैं, उसके अंदर भी स्पेकुलेशन होते हैं, डेली रेट्स उनके चेंज होते हैं. सर ऑक्शन कह रहे हो सर? ऑक्शन नहीं है, जैसे उनकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जैसे शेयर्स की प्राइस फिक्स होती है, इसी तरह इन कमोडिटी की प्राइसेस भी फिक्स होती है. अगर आप अपने किसी भी शहर या सिटी में आप बड़ी होलसेल मंडीज में जाएंगे, जो अनाज मंडीज होती हैं, तो वहां पर बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो लोग उसका भाव इस तरह से तय होता है रोज का. इसी तरह कॉटन, जो रॉ कॉटन होती है, दैट इज ऑल्सो स्पेकुलेटिव आइटम. सो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, दे आर स्पेकुलेटिव businesses when you are dealing in bulk.
So, sir, when the rates are not constant, that is speculative. When rates are constant, non-speculative. Yes, absolutely. सब लोग का माइक ऑफ करो. Right. So therefore, what we are saying is that now, having understood what is speculative businesses, are those businesses where you cannot speculate every day. The prices may be very high on a particular day. The prices may go down on a particular day. So there is a lot of volatility in such businesses, where the volatility of the commodity is very high. Such kind of businesses are known as speculative businesses. Whereas non-speculative businesses are those where the rates are fixed. It's only, based on the rates which that commodity has got, you sell on those rates. Those are called non-speculative businesses. So therefore, now what we are saying that Sir, speculative what do you business, mean by speculative, sir? just now I explained you. I have spent 5-10 minutes to explain that speculative business. अरे जिस चीज का दाम मोल भाव में चलता रहता है वो स्पेकुलेटिव होती है, जिसके प्राइस चेंज होते रहते हैं. जिसके नहीं होते वो नॉन स्पेकुलेटिव हो जाती है. चल ठीक है भाई, थैंक यू. ओके भाई, वेलकम भाई. ठीक है ना. स्पेकुलेटिव समझ गए ना आप. स्पेकुलेटिव का मतलब है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है उन बिजनेसेस में. सो द रेट्स आर hovering from very high to very low. So those kind of businesses are speculative businesses. So what income tax rule says that loss from speculative business can be adjusted or set off against any income other than income from, cannot be adjusted. तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस के ही प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे. लेकिन हाउएवर जो नॉर्मल बिजनेस है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस. तो नॉन स्पेक्युलेटिव को आप नॉन स्पेक्युलेटिव के साथ तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, बट स्पेक्युलेटिव बिजनेस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं. समझ गए आप? सपोज कर लीजिए, Yes, sir. अब मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा और इसको. सपोज मेरा कोई बिजनेस है जिसमें, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, मेरे एक अंकल थे जिनका वेस्टर्न यूपी में एक जगह है, वहां पर मेंथॉल, जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं उसमें मेंथॉल ऑयल साबुन भी आता है सर. यस सर, मेंथॉल. मेंथॉल, जो आप विक्स की गोलियां खाते हैं ना, उसमें Yes, मेंथॉल sir. होता है. मेंथॉल की बड़ी Yes, अच्छी sir. स्मेल होती है एकदम से. आप विक्स भी लगाते हैं जो आप सर पे लगाते हैं, साबुन. हाँ. तो वो मेंथॉल इज अ वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टी. इसके प्लांट्स होते हैं मेंथॉल के साबुन भी आता है प्लांट्स. सर मेंथॉल वाले. तो वो क्या करते हैं कि मेंथॉल के वहां पर सारी खेती है. वेस्टर्न यूपी में एक जगह है, तो वहां पर उसकी खेती से उसका ऑयल निकाला जाता है. वो ऑयल जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में बिकता है. वो ऑयल इतना स्पेक्युलेटिव है, उसके रेट्स इतने ऊपर नीचे होते हैं. तो मेरे जो अंकल थे वो उसका बड़ा स्टॉक रखते थे, और उसके स्पेकुलेशन की वजह से ही या तो उनको बहुत प्रॉफिट हो जाता था जब उसके रेट्स बढ़ते थे, अचानक बहुत बढ़ गए पर केजी, कहाँ तो 500 रुपया केजी हो गया, कहाँ एकदम डाउन हो जाएगा तो 200 रुपीज केजी हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस. तो अगर उनका एक बिजनेस मेंथॉल ऑयल का स्पेकुलेटिव है और दूसरा एक, कुछ लोग कॉटन में डील करते हैं, जो कॉटन, रॉ कॉटन, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसकी कॉटन बनती है, वो कॉटन फिर अगेन इट इज सोल्ड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो अगर वो बिजनेस है, तो अगर कॉटन यार्न भी हाँ स्पेकुलेटिव होता है. तो अगर उनको खाली कॉटन भी स्पेकुलेटिव होती है, सिर्फ कॉटन पूरे बल्क में उसकी पूरी बेल्स बिकती हैं स्पिनिंग मिल्स में या वीविंग मिल्स में. तो अगर उनके दो बिजनेस हैं, तो अगर उनको मेंथॉल ऑयल भी स्पेकुलेटिव है और कॉटन का भी, जो रॉ कॉटन है वो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मेंथॉल ऑयल के लॉस को अगर कॉटन में उनको प्रॉफिट हुआ तो उससे वो एडजस्ट कर सकते हैं. मगर उनका एक सपोज नॉर्मल शोरूम भी था मार्केट में, एक सूटिंग शर्टिंग की, बॉम्बे डाइंग की उनका शोरूम भी था, तो वो हो गया नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, उससे एडजस्ट नहीं कर सकते. लेकिन बॉम्बे डाइंग का जो उनका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हुआ है वो एडजस्ट कर सकते हैं वो मेंथॉल ऑयल के बिजनेस से. समझ गए आप? ये रूल है. नंबर 2. ओके सर. नंबर 2, long term capital loss cannot be set off against any income other than income from long term capital gain. However, short term capital loss can be set off against long term or short term capital gain.
अब शेयर्स का एग्जांपल ले लीजिए, शेयर्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कब होगा? व्हेन आई हैव सोल्ड माय शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, राइट? एंड शॉर्ट टर्म Yes, sir. कैपिटल गेन और लॉस कब होगा? व्हेन आई हैव सोल्ड माय शेयर्स विद इन 1 ईयर। तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में कैपिटल लॉस हुआ है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म ही कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकता हूं शेयर्स के। अगर 1 साल के अंदर मैंने शेयर्स बेच दिए और मुझे उसमें लॉस हुआ है, उसको मैं एडजस्ट दोनों के साथ कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म के साथ भी और शॉर्ट टर्म के साथ भी, ये याद रखिए। ये रूल किसने बनाया है? कि जिससे लोग लॉन्ग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट ज्यादा ना करें लोग, सो दैट पीपल डू नॉट इन्वेस्ट their shares in long short term. So it is to encourage people to encourage investing in long term, because otherwise what will happen if the people are making, they are investing for short term, they are selling their shares even after 1 month 2 months, so if they make a loss and they are adjusting the long term capital loss with the short term capital gain, then government will not get any taxes. So they are saying that if long term capital loss either of property or of shares can be adjusted only against long term capital gain, but short term capital loss can be adjusted with both long term as well as short term. Is it clear to you people? Okay, we come to the third point now. No loss can be set off against income from winnings from lotteries, crossword puzzles, race including horse race, card game, or any other income of any sort, or from gambling or betting of any form or nature. So if somebody is investing the money in lotteries, crossword puzzles, horse races, so if he incurs a loss, that loss can be adjusted only with the similar things, not with any other businesses, whether speculative or non-speculative. He can adjust it only with the similar thing. Sorry, I correct myself. No loss can be set off, including horse rate and any other from gambling or betting of any form. He cannot adjust it with any form. So these rules have been made to discourage people from investing in lotteries, crossword puzzles, horse races. If they make a loss, they make a loss. They cannot adjust it with any other thing. Okay. Are you with me? Okay, sir. Okay. Okay. Fourth point is. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Fourth point is loss. See my cursor. Loss from the business of owning and maintaining horse races cannot be set off against any income other than income from business of owning and maintaining horse races. Now, this is different from the third point. Third point was you have won a horse race, but here you are maintaining race horses. You have got a stable where you are preparing those horses to become race horses. So if you have incurred loss in any of this business, you can adjust it with only similar business of another race horse business. For example, you have two kind of stables. One is in Bengaluru and other is in Delhi. So Bengaluru race horse stable has incurred some loss. You can adjust with another race horse stable in Delhi, not with any other business, right? That was the fourth point. Fifth point says, loss from business specified under section 35 AD cannot be set off against any other income except income from specified business. Now 35 AD means some specified business like setting up of a cold chain facility, setting up and operating warehousing facility for storage of agricultural produce, developing and building a housing projects. तो ये तीन तरह के businesses हैं: cold chain facility, setting up of warehouses to store agricultural products, and building of house projects, basically affordable housing projects हैं ये सारे businesses 35 AD में आते हैं. So these kind of business losses can be adjusted with similar businesses only. So these were some of the rules of intra-head adjustment, right? Intra-head adjustment. Next is meaning of inter-head adjustment, which I told you, which is across various heads. For example, house property loss
capital gain, house property loss with income from other sources, or house property loss with income from salaries. So that is called interhead adjustment. So income tax rule says that first of all, any income tax assessee will adjust the loss in interhead adjustment. Only when he is not able to adjust in interhead adjustment, then only he will go for intrahead adjustment. Sorry, I spoke in the reverse way. First of all, he will try for intrahead adjustment. If there is no adjustment, then he will go for interhead adjustment. सर बाकी कल करते हैं, टाइम भी हो गया थोड़ा। ओके ओके सर काफी है आज के लिए। ठीक है सर। यस सर, अब तो टाइम भी हो गया सर। चलिए इसको फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं अभी। यस सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. Let me take your attendance then. Okay, sir. यस सर। Okay, sir. So let me take your attendance. यस सर। सर नाम और नाम बताओ बोल सर, के आप जाना कैसे? सबके, कोई छूट ना जाए। सर सबको हेलो बोलने के लिए कहा सर, एक बार ये भी। So I have stopped the recording also now.